So good evening, guys. Good evening to everyone. So we are starting with today's options masterclass. So what we will do in today's session, आज के session में what we will do, we will discuss some intraday option buying strategy. ठीक है, आप call option buy करके put option buy करके intraday में how you can trade. Okay, those strategies we will discuss. I hope everyone know the basic of options. आपको at least call option क्या होता है, put option क्या होता है, ये चीजें आपको I hope you guys know these things. Okay, type in chat box if you know what is call option, what is put option at basic level. Right, so these basics are clear. So when the view is positive, so what we should do, we should buy call or we should buy put option. Okay, type your answer in chat box. अगर आपका view positive है तो we will buy call or we will buy put option. Right, we will go for call option, and if view is bearish we will go for put option. Now very important point guys, when we buy option, देखिए जब भी हम लोग options buy करते हैं intraday में, okay, we want momentum in our favor. Okay, we want momentum because options are depreciating assets. Okay, you should be aware of this fact as a trader. Options are depreciating assets. Okay, this means with passage of time option premium decreases. So this is called as time decay or premium decay. So because of which whenever we buy option we want momentum. अगर आपने call option buy किया तो price should move up at fast pace. Okay, should not take time. अगर थोड़ा भी price sideways हो गया, so because of this premium decay, okay, your option premium will decrease. अगर आपने put option buy किया है तो price must come down, okay, at a fast pace. Otherwise we cannot make profit in intraday. So this I have covered on bullish view. Okay, you guys already know this. On bullish view we will buy call option, and on bearish view we will buy put option. Now what we will do, we will cover one intraday trading strategy. पहले हम लोग gap up opening strategy discuss कर लेते हैं. So let's say for example on Monday, okay, these are the OHLC आपको दिया हुआ है, opening high low close. So on Monday you can see price opened at 100 and finally it closed at 102. But look at the day high and day low. Okay, after opening at 100 it came down to 97, and before closing at 102 it went up till 108. Now see what happened next day. Okay, next day we got opening at 105. Now compare this opening with previous day closing. Can you see previous day closing was 102. Next day you got opening at 105. So this is gap up opening, but this is partial gap up opening. ठीक है, इसको हम लोग partial gap up कहेंगे because no doubt price देखिए previous day close से ऊपर open हुई है, but at the same time it is below previous day high. Previous day high के नीचे है. So this type of gap up opening is called as partial gap up opening. Now this is the second scenario. Here you can see the opening is 110. Now in this case you can see price is not only above opening price. Okay, sorry. Here you can see opening price is 110, which is not only above previous day closing, but it is also above previous day high. So this is full gap up opening. पिछले दिन के high के ऊपर open हुआ है, so इसको हम full gap up opening कहेंगे. So how we can trade options, okay, on the day of full gap up opening, that we will discuss. Okay, so this is how to trade full gap up opening in intraday. So time frame we will follow 5 minutes. Now on 5 minutes time frame, okay, what we will do, we will focus on first candle. 5 मिनट के time frame पे आप first candle पे focus कीजिए. We want open equal to low formation. Okay, first candle का formation क्या होना चाहिए? Open equal to low. Now how we will go for long trade? See, we will go for long trade if these two conditions are met. Okay, price is opening above full previous day high, अगर price पिछले दिन के high के ऊपर open हुआ है, and first candle is having open equal to low. Open equal to low indicates buyers are active. That's why price is not going below opening price. Okay, that's why we have open equal to low formation. After gap up opening, price continuously ऊपर ही trade कर रहा है. That's why we do not see price is going down. That's why we have open equal to low formation. So this indicates buyers are active. So if you are meeting these two conditions, अगर ये दो conditions meet हो रही है तो हम लोग trade कैसे लेंगे? Okay, first I will show you how you can trade in equity, and then we will see how we can trade in options. So we will take long trade above first candle high. First candle का low stop loss होगा, and target will be range of first candle. So this is the example of Infosys. Here you can see we got gap up opening on 8th. Okay, clearly you can see the big gap
on graph, and this is 5 minutes time frame. Look at the first candle. आप first candle को ध्यान से देखिए. This is a very big bullish candle without lower shadow. अगर candle bullish है, lower shadow नहीं है, मतलब open is equal to low. Okay, so this candle will start 9:15. So this candle will close at 9:20. What is the high of first candle? 1747.50. Low is 1732.60. So 1747.50 के ऊपर आपको परचेस करना है, बाय करना है. 1732 will be stop loss. Range 15 points का है, so 15 points can be the target. Okay, so this is how you can trade in equity segment, and you can always follow position sizing. Now at the same time, let's say I want to trade in options. तो हम options में इसको कैसे trade करेंगे? First of all, we will decide strike price. Okay, which strike price we will buy. See, this is the setup for call option, because in this setup, if price cross first candle high, okay, price will shoot up, price will move up. So as a trader, what we can do, we can buy call option. हम लोग call option purchase कर सकते हैं. Now the question is which strike price we should buy. So the answer is ATM strike price. Okay, we will buy at the money strike price. So if Infosys का first candle का high मुझे दिख रहा है 1747.50. So can you guys tell me what will be the ATM strike price? What will be the ATM strike price? Right, it will be 1750. So you can open, okay, 1750. आप 1750 open कीजिए. अभी देखो Infosys में 20 points का gap है. There is a gap of 20 points. So 1740 and next strike price is available 1760. So if 1750 is not available, okay, we will select nearest strike price. तो 1747.50 के जो nearest strike price है वो है 1740. So I will open 1740 call option graph and I will focus on first candle. Here also you can see the same formation. यहाँ पर भी आपको देखिए same formation दिख रहा है. First candle bullish है, open is equal to low. So how we will trade in the same way. Okay, ये first candle का high cross हो रहा है, आप buy कीजिए, low stop loss रखिए. So this is 1740 call option graph. Okay, first candle का high मुझे दिख रहा है 35.80. Okay, 35.80 is the high and low is 28.60. So I will buy about 35.80. My stop loss will be 28.60. So almost 7 points का मुझे range दिख रहा है. 7 points will be my target. So somewhere 42 will be my target. And here you can see the lot size. Okay, Infosys का जो lot size है वो है 300 quantity. Okay, 300 units. So we are taking, risk of 7 points. हम 7 points का risk ले रहे हैं. So 300 into 7. Okay, 2100 का risk है. If you can afford this much of risk, then you can trade this option. And सामने reward भी आपको 7 points मिलेगा. Or else you can trade in equity. आप equity में काम कीजिए. So equity में you know very well how to trade. 1747.50 के ऊपर buy कीजिए, 1732.60 stop loss. Okay, you can always follow position size. Okay, position size is very important. आपको ये steps follow करने होंगे. Okay, trade risk आपको calculate करना है. 15 points का trade risk है. And then you need to decide account risk, and then you can decide how many shares you can buy. So let's continue with this example. एक बार हम लोग position size की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर. Let's say I want to take a risk of 1500. Okay, 15 points का range दिख रहा है. Okay, 1500 का risk है. So 1500 divided by 15. Okay, we should go for 100 shares. Now what is the cost to buy 100 shares? 1747.50. Okay, total 100 shares we are buying. So can you tell me what will be the total investment? If my account risk is 1500, okay, trade risk is 15 points. So 1500 divided by 15. 1500 divided by 15, we will go for 100 shares. एक शेयर का प्राइस है 1747.50 into आप 100 कीजिए. Now in intraday you will get leverage. Okay, brokers will give you 5 times leverage. So now tell me how much investment we need. Okay, how much investment people need? 1,74,700 को आप divide कीजिए 5 से. Okay, now you can do the calculation because you will get 5 times leverage in equity segment.
right? So somewhere 34,950 you need. So this is how you can calculate. Okay, with 5 times leverage, you can calculate how much, okay, capital we need. And we will not buy ITM, we will buy ATM. Okay, at the money option हम लोग खरीद रहे हैं. We are buying at the money option. Okay, so at the money option means strike price, which is available very close to recent price. So once again you can see 1747.50 जब break होगा, then we will buy call option. So 1747.50 के जो nearest strike price available है Infosys में, that is 1740. So therefore we will buy 1740. Okay, we will buy always ATM strike price. ATM means nearest strike price available. Okay, now gap down opening we will discuss how we can trade at the time of gap down. So we want full gap down. Here you can see previous day low मुझे 97 दिख रहा है. Next day आप देखिए price नीचे open हुआ. Next day it opened at 94. Okay, so this is full gap down. So how to trade full gap down? We have seen this. Okay, first condition क्या होना चाहिए? Full gap down. Opening should be below previous day low. Second condition, we want open equal to high formation. Okay, in first candle on 5 minutes time frame. तो इसमें हम ट्रेड कैसे लेंगे? फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे शॉर्ट करना है. फर्स्ट कैंडल का हाई स्टॉप लॉस, रेंज टारगेट विल बी रेंज ऑफ फर्स्ट कैंडल. सो हियर यू कैन सी दिस इज LIC हाउसिंग फाइनेंस. ओके, फर्स्ट कैंडल का लो 353 एंड हाई इज 361. नाउ गो शॉर्ट बिलो 353. यहां पर आपको शॉर्ट करना है and target will be 8 points. Okay, so 353 minus 8 points, 345 will be the target. Now this is the setup to buy put option in intraday. आप ये setup के basis पे put option खरीद सकते हो. Now tell me what will be the ATM strike price. देखिए हम लोग trade कब initiate करेंगे? When we will initiate a trade? See, we will initiate a trade only below 353. Okay, once price goes below 353, then we will initiate a trade. So now tell me which will be the ATM strike price. Okay, 353 के आसपास कौन सी strike price available होगी in LIC housing finance? Right, 350. Right, 350 strike price will be available. Right. So here you can see 350 put option. Okay, this is the graph of 350 put option. यहां पर देखिए फर्स्ट कैंडल पे आप फोकस कीजिए. फर्स्ट कैंडल का हाई 6.75, लो इज 4.75. So how many points risk is there? You can see 2 points. Okay, 2 points का risk है. 6.75 जैसे ही क्रॉस हो रहा है आप पुट ऑप्शन खरीदिए. Okay, here you can see the trade is triggered. 4.75 का आपको स्टॉप लॉस रखना है. 8.75 का टारगेट. Okay, target will also be 2 points. Yes, we will trade with 1:1 risk reward ratio. Okay, 8.75 will be the target. Okay, now here you can see this is a very recent example. Okay, Wipro gap down. Try to find out आपको कहां पर दिख रहा है gap down. On which date can you see gap down in Wipro? Okay, very recently we got this 12th April. See, this is the first candle. इसके लो के नीचे आपको सेल करना है. Okay, इसके हाई के ऊपर आपको खरीदना. Okay, go short below first candle low and high will be your stop loss. Eventually you can see slowly and gradually. इसमें देखिए क्या हुआ, प्राइस जो है वो तुरंत नीचे नहीं जा रहा है. It is not going down at a fast pace, right? It went sideways. काफी देर तक देखिए वो sideways हो गया and then it went down. Now see how option reacted on this day. अगर आप options में ट्रेड करते थे, see यहाँ पर आपको प्रॉफिट नहीं होता था because it took lot of time to give you the movement on downside. So this is the problem, okay, with options. At times if price is not coming down at a fast pace, so if you trade in option you will not make profit. So in options if you see price actually came down till first candle low. ठीक है, प्राइस वापस नीचे आ गया फर्स्ट कैंडल लो पे. बट से इन इक्विटी द स्टॉप लॉस इज नॉट हिट. यहां तक प्राइस ऊपर आया ही नहीं है. सो ऑलवेज फोकस ऑन स्पॉट. आप स्पॉट पे फोकस कीजिए जब तक यहां पर स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है आपका. ओके, इन स्पॉट इफ स्टॉप लॉस इज नॉट हिट, ओके, डू नॉट एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड. ओके, डू नॉट एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड बिकॉज ऑप्शंस में कुछ अलग ही मूवमेंट चलता है.
सो अगर यहाँ पर जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है आपका इन स्पॉट, ओके, डू नॉट एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। ओके, दिस इज टाटा मोटर्स, इसमें भी आप ट्राई कीजिए, फाइंड कीजिए सेटअप कभी दिख रहा है आपको। Yes, in cash market also it will work. So you have two choices now. Either you can trade in cash market or you can trade in options. Right? Try to find out from Tata Motors. So we have a scanners for same. ठीक है, हमारे पास scanners हैं इसके. So we will run scanner in live market and you will get the stocks with full gap up opening, full gap down opening, with open equal to low, open equal to high. Okay, in Tata Motors also you can see we got this setup on 12th. This is only for stocks, okay, not for Nifty, Bank Nifty. Okay, not for Nifty, Bank Nifty. Okay, now tell me guys which strike price we will buy. आप मुझे strike price बताइए in Tata Motors. Okay, which strike price we will buy. Okay, first candle ka low, I hope you can say it is 443. Okay, 443 is first candle low. So 440 strike we will buy. How to trade in equity? पहले वो discuss कर लेते हैं how we can trade in equity. So type entry, target, stop loss. आप entry, target, stop loss type कीजिए. If you are trading in equity, how we will trade? Type target, entry, stop loss. Okay, I will request everyone type entry, target, stop loss. Okay, target is 436. Perfect. Okay, and stop loss will be first candle high. So maybe round off, you can do it 451, 450.60, 451 can be the stop loss. Perfect. Now see, this is Tata Motors 440 put option. Okay, this is 440 put option. 14.20 first candle ka high dikh raha hai. 12.15 is the low of first candle. Now type target, entry, stop loss. Okay, how we will create now put option? First candle high 14.20, low 12.50. So now type target, entry, stop loss. Okay. 14.20 के ऊपर खरीदिए इसको, 12.15 stop loss and 2 points you can keep target. Okay, so somewhere 16.15, 16.20 can be the target. Okay, now let me show you this screener. अगर आपको screener के बारे में नहीं पता, let me show you how we can run this screener and at what time, okay, we have to run. So this is the screener for gap down opening. अगर कोई भी stock full gap down के साथ नीचे open हो रहा है, so here you can see I have already given the condition, okay, to this screener. I want those stocks which open below previous day low. Okay, here you can see opening should be below previous day low and open should be equal to high. So already I have given these condition to this screener. What you can do, you just click on run scan. आपको run scan पे click करना है. Okay, we will share this link with you. You just click on run scan. At what time you will run scanner? 9:20. Okay, after 5 minutes. Okay, trading start at 9:50. Okay, you can run scanner after 5 minutes. 9:20, 9:21 you can run. Okay, this screener. Okay, click on run scan and scroll down. Okay, what scanner will do? Scanner will quickly look for those stocks which meet, you know, these two conditions: opening below previous day low and open equal to high. So if we do not get any stock, अगर किसी भी stock में ये दो condition match नहीं हो रही है, so you will get this message. Okay, no stocks filtered in this scan.
Now, in the same way, we have a screener for gap up opening. Okay, opening above previous day high and open equal to low. So here also I have given the condition, open should be above previous day high and open should be equal to low. Okay, just click on run scan. Okay, same time 9:20, 9:21 you can run scanner. So as per last trading session, ठीक है, जो last trading session Wednesday को हो गया, as per that you can see we do not got any stocks. Okay, so we do not got any stocks. Right, so we will send this screener link in WhatsApp group, आपको मिल जाएंगे screeners link. Okay, now we will conduct one quick quiz. Okay, what is full gap up opening? इसमें से आपको बताना A और B में से which is the correct answer. Okay, Pratik sir, see, we have back tested. So index में mostly you will not get gap up, open equal to high, open equal to low very frequently. So this is good for stocks. Stocks में ये setups बनते रहते हैं, but Nifty, Bank Nifty में ये setups नहीं बनते. So that's why stick to stocks. So if you have premium version of charting, yes, then you can do the back testing. Okay, I'll be ending the poll in the next 10 seconds. Okay, Ashish sir, आप 9:20, 9:21, okay, you can try to run scanner. 9:20 या उसके बाद आप रन कीजिए. ठीक है, 9:20, 9:21 जितना आप जल्दी रन करेंगे उतना अच्छा. 9:20, 9:21 तक आप रन कीजिए. Okay, Manish sir, I'll be ending the poll now. 81% people say opening above previous day high. Yes, opening above previous day high उसको हम full gap up opening कहेंगे. अगर सिर्फ previous day close के ऊपर open हो रहा है तो partial gap up. Okay, now second question is very simple on bullish view. So you know this. ठीक है, क्या करना है ये दिन पे? If we have a bullish view on any stock or any index, then we will go for yes, Pratik, if you are getting this setup, you can trade in index also. Okay, and we ending the poll now. When you said 94% people say buy call option. Right, so we have a bullish view. We are expecting prices to move up. हम लोग call खरीदेंगे. देखिए, अगर आप put खरीद रहे हो मतलब आपका व्यू bearish है. अगर आप call option sell कर रहे हो मतलब again आपका व्यू bearish है. You are expecting prices to fall. So on bullish view, we should go for call option. Okay, to run scanner time is 9:20. Okay, you can run scanner at 9:20 a.m. after first 5 minutes. Okay, guys, so any doubts till now you can ask. कुछ भी अगर आपको doubts हैं related to two strategies which we have discussed, you can ask. Then we will move to third strategy. Okay, then we will cover gap up failed. So how to trade gap up failed, that we will discuss. If anyone has doubts, they can raise their hands and we'll unmute you. Okay, sir, I'll be unmuting Manjur Hussain, sir. So please try to unmute. Yeah, thank you. So my question is, can we trade in a partial gap up setup? No, these setups are for full gap. Okay.
Okay, that's it. Yes, That was not partial. Okay, this will work only in case of full gap up or full gap down. Thank you so much. Yeah. Okay. Raviraj sir, please try to unmute. Good evening, sir. Yes, good evening. Sir, how many stocks are available for option trading? See, more than 150 stocks are available in FNO. Okay, and how can you get this list of the stock? आपको scanner run करना है. See, this scanner I have shared with you. Yes, yes. You have to run this scanner in live market and you will get the list of stocks जिनमें ये setup बना है. It is for open high, open low, exactly fine. But which stock is available for option trading? How can get the stock names? So whichever stock is available in this list, यहाँ पर जो भी stocks आपको दिखेंगे ना, वो सारे stocks available होंगे options में. Okay. Right, because we are running future segment. If you see here, let me show you. हम लोग जो scan कर रहे हैं वो उन stocks को scan कर रहे हैं जो futures options में available है. राइट सर, लेकिन मुझे यही जानना है कि कौन से स्टॉक अवेलेबल है फ्यूचर और उस सेगमेंट के लिए, फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट आप गूगल कीजिए, उसके लिए लिस्ट मिल जाएगी. 150 से ज्यादा स्टॉक्स हैं. ओके, राइट, जो निफ्टी 50 में स्टॉक्स आते हैं वो सारे 50 अवेलेबल है. इसके अलावा भी और भी स्टॉक्स ओपन है. अगर आपको हर एक स्टॉक चेक करना है तो आप गूगल टाइप कीजिए, यू विल गेट द लिस्ट ऑफ 150 स्टॉक्स. ओके सर, थैंक यू. Okay, Kaushik sir is asking why not in 15 minutes. See, if you follow 15 minutes, तब तक movement काफी निकल जाएगा, right? This is sometimes you will get very quick moves. For example, यहाँ पर आप देख सकते हैं, we have seen Tata Motors example. See, in 15 minutes the move has already happened. So that's why we are trying to trade this on 5 minutes time frame, because in first half an hour, okay, you are getting some good moves in morning. तो अगर आप 15 मिनट्स का वेट करेंगे तो देखो 15 मिनट्स में वी विल रीच हियर. सो तब तक के लिए बड़ी मूवमेंट निकल जाएगा. Open equal to low is not required for options chart. Okay, it is required only for spot. Okay, once you cross check this setup in spot, then you can trade in options. See, Vinay, we will not trade stop loss. Okay, we will follow this fixed target and stop loss system. Okay, हर एक सेटअप देखिए ट्रेडिंग के लिए नहीं होता है. आप ट्रेडिंग तभी कीजिए अगर आपके पास ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है. If you have a trend following system, then definitely you can trail stop loss. Otherwise, have a fixed stop loss in mind and have a fixed target. And Pratik is asking, it is better to trade after 10 AM. देखिए कभी ट्रेड करना चाहिए, ये सेटअप टू सेटअप के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे ये सेटअप बिगनिंग मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ एन आवर में काफी अच्छा काम करता है. So you can definitely trade before 10 AM also. So when to trade exactly depend on setup to setup. This strategy is only for stocks, okay, not for index. Okay, Deepak sir, आप देखिए हमारे सेटअप का कंडीशन समझिए. व्हाट इज द कंडीशन ऑफ आवर सेटअप? ओपन इक्वल टू लो, ओपन इक्वल टू हाई, तो ये 9:15 को ही बन जाते हैं. सो इवन दो चार्ट स्कैनर आपको डिले रिजल्ट देता है, बट इट विल गिव यू द एक्यूरेट रिजल्ट. आप ट्राई कीजिए, यू कैन रन स्कैनर एट 9:21, यू विल गेट द लिस्ट ऑफ स्टॉक्स जिनमें ये सेटअप फॉर्म हुआ. Yes, index strategy भी है. Third strategy which we will discuss now. Okay, that you can trade on index also. So how you find these two setups? आपको ये दो setups कैसे लगे? Was this simple setup? How you find? Share your feedback. Success rate is more than 70% for these two strategies which we have discussed. So are you guys interested to learn more? कुछ और strategies आपको सीखनी है? Okay, these are the pure intraday strategies. So we also have some positional strategies, okay, for options. I think so many people are interested. Now we can tell about the bootcamp also. Can we? I'll Yes. just share my screen. Give me a second.
right? And post that we will discuss third strategy. Okay, is my screen visible? Yes. Okay, ठीक है. तो since we all know कि options एक बहुत ही ज़्यादा high risk and high reward game रहती है, and it is not easy to make money in long term in options. So we have this boot camp with Manish sir, options trading boot camp. इसमें will be teaching you Manish sir की tried and back tested strategies जो मनीष सर ने ओवर द इयर्स डेवलप किए हैं, ठीक है, जिनका मतलब हम आप में से बहुत लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी बूट कैंप लगाया हुआ है मनीष सर के साथ, तो यू नो कि मनीष सर हैज ऑलवेज टॉट स्ट्रैटेजीज जो उनकी बैक टेस्टेड होती हैं, जो प्रूवन सक्सेस देती हैं, राइट, ठीक है. तो इन दिस बूट कैंप आल्सो विल बी टीचिंग ऑल द बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजीज जो प्रूवन सक्सेस देती हैं, एंड विल बी टीचिंग यू हाउ टू ट्रेड प्रॉफिटेबली इन ऑप्शंस, ठीक है. तो आई विल जस्ट शेयर द डिटेल्स. मनीष सर एक बार सिलेबस बता दीजिए. Yes. So guys, in today's session, we are covering, intraday strategy. हम लोग intraday option buying strategy discuss कर रहे हैं. But in bootcamp, what we will do, we will cover positional strategy. आप positional trading कैसे कर सकते हो? देखिए, अगर आपको futures and options में एक positional trading करनी है, then there is the overnight risk. वहां पर एक overnight risk आ जाता है. So उसको protect करने के लिए, what you can do, you can create those strategy which give you the protection from overnight. मतलब आप अपने पोजीशन को hedge करके चलिए अगर आप ओवरनाइट पोजीशन ले रहे हैं फ्यूचर्स ऑप्शंस में. लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने देखा किसी स्टॉक में रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है. नाउ व्हाट मेनी न्यू ट्रेडर्स डू, सिर्फ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देके वो लोग सिर्फ कॉल ऑप्शन बाय करते हैं. नाउ द प्रॉब्लम इज वो ब्रेकआउट जो है वो फेल भी जा सकता है. ओके, देयर इज अ पॉसिबिलिटी. It is also possible after a breakout for next 3 to 4 days or 5 days stock turn sideways. This is also can happen. So there is no 100% guarantee कि अगर एक बार स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया तो वहां से वो ऊपर ही जाएगा. इट कैन कम डाउन, इट कैन गो साइडवेज. तो अगर आप सिर्फ कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, ओके, डेफिनेटली यू विल नॉट मेक प्रॉफिट. ठीक है, प्रॉफिट तो नहीं होगा, लॉस ज्यादा होगा. तो इससे अच्छा आप क्या कीजिए, पोजिशन को हेज करके चलिए. अगर सेटअप फेल भी हुआ, सो यू विल कम आउट from that setup with a limited loss क्योंकि आपने position hedge की थी. So all these strategies we will learn in this boot camp. So here you can see bull call spread, bear call spread, bull put spread, bear put spread. So these are known as debit and credit spread strategies. तो ये हम सीखेंगे. Protective call and protective put strategy we will learn. तो अगर आप futures में trade करते हो, as a trader if you prefer to buy futures or if you prefer to sell futures, देन उसमें भी ज्यादा रिस्क है. तो अगर आप फ्यूचर्स बाय कर रहे हो तो साथ में एक आप पुट ऑप्शन भी खरीद के चलिए. अगर आप फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन लिया आपने तो एक एटीएम कॉल ऑप्शन आप बाय करके चलिए. सो इन केस आपका व्यू गलत भी जा रहा है तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन आपको प्रोटेक्ट करेंगे. सो दीज आर नोन एज प्रोटेक्टिव कॉल एंड प्रोटेक्टिव स्ट्रैटेजी. सो इन विच सिनेरियो वी शुड डिजाइन विच स्ट्रैटेजी, ये सब सीखेंगे हम बूट कैंप में. Now, if you wish to trade Nifty, Bank Nifty, as I told you in beginning, options are depreciating assets. Time के साथ साथ option premium की value कम होती जाती है. तो अगर आपको time decay earn करना है, as a trader, if you wish to earn time decay, then you can design short straddle in Nifty and Bank Nifty. Okay, Nifty, Bank Nifty, these are the two indices. और index में आपको पता होगा every week we have expiry. In stocks there is a concept of monthly expiry, but in index we have a weekly expiry. So every week what we can do, we can create short straddle in Nifty and in Bank Nifty to earn time decay. So this we will cover in bootcamp. And based on CPR, अगर आपने CPR पता है आपको, if you are aware of basic CPR, so there is a concept of white CPR. And on white CPR, chances are we will get sideways stick. So again on that day option buyers will not make profit. So how we can create short straddle strategy on white CPR day? That also we will discuss in bootcamp. And then we will also discuss in-depth option chain analysis. अगर आप option writer हो तो आप option chain analysis read करना सीखेंगे. Now when you do this analysis every Wednesday and every Thursday, okay, for index, so you will get the idea whether Nifty is bullish or bearish. आपको एक biasness judge करने का idea आ जाएगा. And you can actually predict the range, settlement range. On Thursday, in which range Nifty is likely to settle. So that you can learn from in-depth option chain analysis.
So 70% of time this analysis works well. And option chain is dynamic data. It keeps on changing in live market. So for index, it is advisable. आप ये option chain को study कीजिए 1 day before expiry, that is on Wednesday, and on Thursday. Okay, that is on the day of expiry. So this is the syllabus for bootcamp. Yeah. Yes, Richa. Okay, sir. Also, this will be the calendar, and we'll be having this. The options bootcamp will be a weekend batch. Okay, it will be starting from 23rd of April, that is next week, till 14th of May. Okay, 7 classes होंगी जिसमें Manish sir ने syllabus बता दिया है. We'll be covering different things in 7 days, and it will be spread over 3 weeks. ठीक है, 7-day live classes होंगी and weekend batch होगा. Time would be 4 to 6 p.m. on Saturdays and Sundays. ठीक है, the original cost is 7,000 rupees, but the price of the boot camp for you guys, since many of you are enrolled and this is a class for enrolled students, and that's why we'll be giving you a discount, and you can enroll at rupees 4,999. And Manish sir ne basic, since you all know, we'll be adding you to a WhatsApp group with Manish sir, jahan pe you can ask your doubts directly. And after the bootcamp ends, agar tab bhi aapko koi bhi doubts hai, so you can ask him directly. Recordings will be provided for each and every session, so you don't need to worry about that. PPTs would also be provided for each and every session for lifetime access. ठीक है. Also, you'll be given one-on-one portfolio review. Manish sir, एक बारी इस बारे में बता सकते हैं what all will be done in this? Right. So in case if you are taking any trades या आपने कोई भी trade लिया है as of now, तो उसके हम आपका important levels, okay, we will share the important levels with you. So in case if you get stuck, you know what after taking position, what to do next, whether you should exit from the trade or whether you should hold, so that we will guide you. So one portfolio review will be there. अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं जो ट्रेडिंग के लिए आपने लिए, ओके, नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट्स बट फॉर ट्रेडिंग. यस रिचा. Yes sir. And okay, so the first 20 enrollments will be getting added benefits. Yeah, you will be getting 2 free ebooks and a premium pass of VIP pass of the Super Alpha conference जो इस month होने वाली है. And dates and time I've already confirmed. I'll just share the link with everyone. I'll share the link with everyone for enrollment. All the interested students can enroll via this link that I've shared. You can also enroll via number, or directly you can use Paytm, Google Pay and Phone Pay. I'll just share that number also. And I think that's it from my side. Yes, also one more thing, you'll be given live market updates on Wednesdays and Thursdays. Manish sir, isko ek bari bata do. So as I told you guys, we will learn, you know, option chain data analysis, and it works very well on Wednesday and Thursday. So on Wednesday and Thursday, okay, I will give you the live market updates. So I will tell you the biasness, whether Nifty has a bullish bias, bearish bias, and on expiry day, we will try to, you know, predict the range. Okay, Nifty is likely to settle in what range with the help of option chain analysis. So those live market updates you will get every Wednesday and Thursday. Okay, so if anyone else has any doubts regarding the bootcamp now, they can type it in the chat or they can raise their hands. I'll just lower the hands of everyone so that, yeah. So if anyone else has any doubts regarding the bootcamp, they can raise their hands so that we can take them up now. Okay, we have one doubt. Vidya Singh sir, can you please unmute yourself? हेलो. Hello. हाँ मैम, मैं सर से मतलब एक क्वेश्चन पूछना है. हाँ जी सर. नहीं, मेरा स्ट्रेटेजी का बारे में, मतलब मेरा स्ट्रेटेजी मैक्सिमम मतलब टारगेट में एक्यूरेसी होता है, लेकिन प्रॉफिट बुक नहीं हो पाता है. मतलब कितना परसेंट 1:2 द चाइना, कितना मतलब कितना रेशियो से मतलब प्रॉफिट बुक होना चाहिए इंडेक्स में? देखिए कितना प्रॉफिट बुक होना चाहिए वो अगेन सेटअप टू सेटअप के ऊपर डिपेंड करता है.
जैसे आज सर। हमने जो आपको सेटअप सिखा है, तो उसमें सर। 1:1 मोस्ट ऑफ द टाइम मिलता है, 70-80% टाइम आपको 1:1 ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। हाँ सर। यस। ओके सर। Okay. Harsh sir is asking, is there any boot camp starting at 9 p.m.? Harsh sir, that would be too late, and there's no boot camp that will be starting at 9 p.m. But you'll be, if you're not available at the specified time, you'll be provided with the recordings of each and every session. Ashish sir, I'll just confirm the payment. And also I've also started getting the screenshots of the payments. Jay Kumar sir ki bhi payment aa gayi hai mere paas. I'll just confirm each and every payment. Dija doll is asking time. Time would be 4 to 6 p.m. on weekends. Saturdays and Sundays, 4 to 6 p.m. Okay, if anyone else has, okay, Vidya Singh sir ka doubt humne le liya hai. If anyone else has any doubts, feel free to ask so that you can also cover the next topics then after that. Yes, the recordings will be provided to you. जैसे ही class खत्म होगी, since ये तो 4 to 6 की class है, तो we'll be providing the recordings on the same day by midnight. For weekends starting 23 April till 4th of May. Ma'am, I'll just share the calendar with you. You can see it in the calendar. Actually, Manish sir is not available, and this boot camp is specially done because we were not planning to do this boot camp, but since many people were interested in learning options, and many people showed their interest and requested Manish sir, that's why we are starting with the options boot camp. That's why we have this weekend batch. David sir, please, can you just drop your number so that I can call you and talk about this? No problem, Bhau Sahib sir. No problem. Sir, what will be the minimum money? Manish sir, can you just answer this? What will be the minimum money to trade options? See, if you are trading an index, then 8 to 10,000 is minimum investment or capital you need to trade one lot in Nifty Bank Nifty ATM option. Okay. Yes, Vrudhi ma'am, the recording will be provided. Sir, what should be the ideal capital for index options? Just a minute. Okay, can you please repeat, Richa, what you ask? What should be the ideal capital for index options? Right, 8 to 10,000 for one lot. Okay. Okay, those who have enrolled, I'll just confirm your payments in the chat only. Just give me 5 minutes and I'll confirm all your payments. And I'll also share, I'll just stop sharing my screen. Nisa, can you just start sharing your screen again? Yeah. Okay. After then, I'll also share the number for those who want to enroll via, by paying directly on PhonePe or Google Pay. You can enroll through this number. मैं नंबर भी सेंड कर रही हूँ. You can directly enroll via this.
Okay. Manish, I think you can, yeah, you can do the next topics, and I'll start confirming the payments in the chat itself. Okay. Now, guys, third setup we are discussing gap up failed technique. So as the name is gap up failed, so what will happen here? Price will open with gap up, but higher levels will not sustain. Okay, price वापस नीचे आ जाएगा. So this is called as gap up failed. Okay, opening जो होगा वो previous day high के ऊपर होगा. Okay, so you will get full gap up opening. Price will open above previous day high, but on 5 minutes time frame, okay, the very first candle will have open equal to high formation. Now, open equal to high formation indicates, sellers are aggressive, sellers are active. That's why price is not crossing opening price. देखिए खुलने के बाद प्राइस ऊपर नहीं जा रही है. That's why we have open equal to high. Price is trading down. Okay, price नीचे ही trade कर रहा है since 9:50. So this information we are getting. No doubt price open with gap up, but sellers are active. Open equal to high. So we can create short trade on this setup. अगर ये सेटअप आपको दिख रहा है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं. सो अगेन हाउ वी विल टेक शॉर्ट ट्रेड. सो वी विल गो शॉर्ट बिलो फर्स्ट कैंडल लो. 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे पहली कैंडल का लो जब ब्रेक होगा, ओके, वी विल गो शॉर्ट. फर्स्ट कैंडल हाई विल बी स्टॉप लॉस and range will be the target. Now here you can see this Sun Pharma. See, previous day high was second last candle. Okay, पिछले दिन पे second last candle ने day high form किया था. Now next day you can see we got gap up opening. Okay, price opened at 783. So this is gap up opening. And look at what happened in first candle. In first candle only price break previous day high. उसने पिछले दिन के हाई को ब्रेक किया एंड केम डाउन. सो दिस इज अलर्ट कैंडल. ओके, इसको हम अलर्ट कैंडल कहेंगे. सो अलर्ट कैंडल इज अ कैंडल, ओके, व्हिच विल ब्रेक प्रीवियस डे हाई ऑन डाउन साइड, और इट मे एटलीस्ट टेस्ट प्रीवियस डे हाई. ओके, जो भी कैंडल प्रीवियस डे हाई को टच कर रहा है या उसको ब्रेक करके नीचे आ रहा है, तो उसको हम अलर्ट कैंडल कहेंगे. सो इन सन फार्मा यू कैन सी द वेरी फर्स्ट कैंडल इज अलर्ट कैंडल with open equal to high formation. So 783 is high, 773 is low. So 10 points का range दिख रहा है. तो आप 773 के नीचे sell कीजिए, 783 आप stop loss लगाइए. Okay, 763 will be the target. 10 points will be the target on downside. And you can trade ATM option. ठीक है, जो भी at the money option आपको दिख रहा है 773 के near, आप उसे buy कर सकते हैं. And here you don't have to wait for candle to get close. देखिए सेकेंड कैंडल में आपका ट्रेड ट्रिगर हो रहा है. द मोमेंट प्राइस ब्रेक फर्स्ट कैंडल लो, ओके, यू कैन एंटर इन द ट्रेड. नो नीड टू वेट फॉर कैंडल टू गेट क्लोज. नाउ यू कैन ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस सेटअप इन IGL. आपको कौन से डेट पे ये सेटअप दिख रहा है? ओके, टाइप इन चैट बॉक्स ऑन विच डेट कैन यू सी द सेटअप. Okay, on 15th. So previous day you can see IGL was in uptrend, and again this candle, third last candle ने day high form किया. Very next day you can see we got gap up opening, but price did not sustain. Immediately it came down, and first candle is having open equal to high. Again यहाँ पर भी आप first candle के low के नीचे sell कीजिए या put option buy कीजिए, and first candle का high, okay, this will be your stop loss. So जब तक price वापस यहाँ तक नहीं आ रही है, okay, you can hold your option. आप ऑप्शन को होल्ड करके रखिए. Okay, here you can see this was the day. Okay, now very recently we got this trade Bandhan Bank. So we also have a scanner for same. Okay, gap up failed का भी scanner है. Let me show you. So all three scanners link, okay, are available. So you don't have to worry on stock selection part. So here I have given the condition. Okay, we want gap up opening above previous day high and open equal to high. Okay, just click on run scan and scroll down.
So here you can see on Wednesday we got one stock which meet the criteria. Okay, बंधन बैंक में ये सेटअप बना था, ओपनिंग प्रीवियस डे हाई के ऊपर था और ओपन और हाई सेम था. You can see here now. Okay, this is Bandhan Bank. We got this trade in last trading session, which was on 13th April. Okay, here you can clearly see the gap up opening. And in first candle only, it came down. First candle के लो के नीचे sell करना था. Eventually, you can see price came down. And see the movement in option. 330 का put option देखिए कैसे perform किया. Okay, slowly and gradually it went up. So जब तक प्राइस वापस आपके स्टॉप लॉस तक नहीं आ रहा है इन स्पॉट, ओके, यू कैन होल्ड द ट्रेड, आप ट्रेड में बने रहिए. Okay, so I'm done with the setups. If you have any doubt, any query, you can ask. Yes, sir. We'll take some doubts now. If anyone has any doubts regarding the bootcamp or the session, they can ask. Okay. I have some doubts pending. Yash sir is saying he could not attend the class and the syllabus neither the price or anything. Sir, एक बारी syllabus बता दीजिए. Okay, I'll contact him. Yash sir, can you just drop your number? I'll share the recording with you. You don't have to worry about that. Yes, Dija ma'am, I'll just share the UPI ID again. And I'll also share the Razorpay link. Shared again. I'll share the recording in the groups only. Okay, we have a few doubts. Subra Prakash sir, please try to unmute yourself. Yes, Richa, good evening. Good evening, sir. I just wanted to know, before enrolling for the course, it's quite a fruitful and informative session going on. I just wanted to know that will the recording of this class will be available, today's class will be available on this WhatsApp group or not? Sir, it will be available. All the classes, all the recordings of all the classes will be given to you if you're attending the class. No, once we have enrolled for boot camp or else also. No, else also will be we will be giving the recordings of today's class. And Right. if you are enrolling in the boot camp, Right. we'll be giving you the recordings of the boot camp also. Okay. Yeah. Okay, fine. Thank you, Richa. Thank you. Okay, thank you. Ashish sir, you can unmute yourself. Manish sir, this Ashish here. आप मतलब अभी मेरा को ऑप्शंस में तो कुछ कोई नॉलेज नहीं है. So I'm a swing trader and I attended your boot camp also. So options का जो basics है और उसको थोड़ा cover करेंगे इसके में? Yes. Okay sir. Yeah. Thank you. Yes. If anyone else has any doubts, they can raise their hands. So can you, yeah, okay. You're already sharing the syllabus. Shweta ma'am, sure you can pay after the class, just, okay. Scanner for Doji candle, sir. Manish sir. ओके, दोजी कैंडल का स्कैनर देखिए, एग्जैक्ट स्कैनर हम लोग बनाएंगे दोजी कैंडल का, तो यू विल गेट वेरी लिमिटेड स्टॉक्स, उसमें से कम स्टॉक्स मिलेंगे. So I will try to make a scanner for doji candle and we will share with you, but number of stocks you get very less. Okay. Because doji means open closing almost same होनी चाहिए, but scanner में हम लोग कंडीशन सेट कर सकते हैं, open is equal to close ditto. Open close अगर ditto सेम है तो ही आपको स्कैनर में स्टॉक दिखेंगे. Lakshmi Narayan is asking, can we trade in futures? Yes, you can trade in futures if you wish.
ठीक है, यही सेम स्ट्रैटेजी के ऊपर आप फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं. Okay, just you need to understand the lot size will be big, so if you can afford to take that much risk, then you can try the same setup in futures also. Bootcamp timings will be 4 to 6. Okay, 4 p.m. to 6 p.m. Okay. I'll share the link again. Manish sir, there's a doubt that I've sent to you. Can you just Yes. okay. Up till then, I'll also share the links. All the interested students can enroll via the link, and I'm also sharing the number. EMA we cannot use with this strategy, Kaushik sir. Okay, this is a momentum strategy, so the moving average will not work as per this strategy. And option basics, जिसको भी देखिए option basics clear नहीं है, so we will give you the option starter kit. Okay, आपको option starter kit दिया जाएगा, so you can learn the option basics. तो हमने option basics में अच्छे से सब कुछ cover किया in detail. What is call option, what is put option, concept of call buyer, call seller, put buyer, put seller, option moneyness, okay, in the at the money, concept of option premium, intrinsic value, time value. So all these things we have already covered in option starter kit that you will get. Index strategy, देखिए, when you enroll in bootcamp, so we do have index strategy. Here you can see, okay, you will learn how we can earn time decay, okay, by doing short straddle in Nifty, Bank Nifty. Again, how we can design short straddle on white CPR day. So ये सब strategies देखिए, day 4, day 5 we will cover index in bootcamp. Expiry day strategy, again I will teach you how you can earn time decay. क्योंकि expiry day पे क्या होता है, जितने भी out the money options होते हैं, right, all OTM options turn 0 on the day of expiry. So that strategy we will learn how we can earn time decay, how to select right strike price to trade on expiry day, so that we will learn. Okay, my team will be confirming all the payments now. And if you guys have any doubts, you can raise your hands. Anything regarding to what Manish sir has just taught. Sir, will you teach any positional optional selling strategy? Manish sir? Manish sir, I think you're on mute. Manish sir, are you there? I think there is some issue from Manish sir's side. Okay, if anyone else has any doubts regarding the bootcamp, feel free to ask me now. You can also raise your hands. Okay, Balakrishnan sir. So please try to unmute. Madam, can I trade call sell and put sell option using this bootcamp? After attending this bootcamp, can I trade? You want to sell options, right? Yes, sell options. Yes, right. that will be covered. Then the second point, I have not traded in sell actually, call sell or put sell. Not a problem. Setups are very simple, so you won't find any problem. We will guide you. The thing is, risk is more, so I don't trade in call sell or put sell. But here see, you need to understand. There is stop loss in system.
Okay. So do not worry on the risk part. And we Okay. will guide you how you can sell option only in intraday. Okay, we will not carry forward. Okay. Initially, Okay. you can start selling Okay. options in intraday, so you will get limited risk, not Okay. unlimited risk. So what is the money needed for trading sell options? Okay, what is the money needed? See, 50 to 60,000 we need if you are doing hedging. Then 50, 60,000 at least you need to sell options in index. If In you sell intraday? naked option, then it can amount can go beyond 1 lakh also. But we Okay. will show you how you can do the hedging. So we can bring down the margin requirement part. Okay, Okay. down. So 50, 60,000 you can expect we need at least to sell For options. trading options intraday, right? For this one. Right, for selling options. Selling options. Okay, sir. Okay, sir. Thank you very much, sir. Manish sir, can I just share my screen now? Yes. Because Okay. some people are still not clear about the timings and the details of the bootcamp. Oh, yeah. Message aate. I'll just share my screen again. And okay. Is my screen visible? Manish sir? Yes, it is visible. Okay, so the details of the bootcamp would be the timings would be 4 to 6 p.m. on weekends. This would be a weekend batch, and the discounted price is 4,999, which is only valid till the end of the masterclass. Okay, nahi to after the classes you'll have to if you want to enroll, you will have to enroll at 7,000 rupees. But for the class, during the class, you can pay at 4,999. The dates of the bootcamp would be 23rd April to 14th of May. Manish sir, syllabus एक बारी और just में बता दीजिए आप please. Sorry, syllabus. Syllabus you are asking? Just में बता दीजिए please. Yes. Right here you can see the syllabus. We will cover spread strategies, debit spread, credit spread, protective call, protective put. Okay, short straddle for index we will cover, and option chain analysis we will cover. Okay. Okay, Shweta ma'am is asking till what time can we make the payment? Shweta ma'am, if you want to avail the discount, you have to pay during the class itself. As soon as the class ends, the discount won't be valid and it will shoot back to 7,000. Now, what is CPR? What is white CPR? जो पूछ रहे हैं. See, this we will cover in bootcamp. So we will show you introduction to CPR, how CPR levels are calculated, how you can use CPR for trading, concept of type CPR, white CPR. Everything will be covered on this day. So do we have the live sessions during the markets? See, we will try to have a live session on Friday, Wednesday and Thursday. As I told you, we will give you the live market update. So maybe around 11 o'clock, 12 o'clock, we can have a session in live market that will give you the update. Every Wednesday, every Thursday. Yeah, we'll be giving you live market updates on Wednesdays and Thursdays. Also, you'll be having a one-on-one portfolio review with Manish sir. Dinesh sir, you can just call me after the class and then I'll clear your doubts there. Ritika ma'am, my teammate will confirm your payment. Sir, how much investment required for straddle? 50, 60,000. Okay, 60,000 you can expect. Okay. Please share the basics of options notes ASAP. If you've enrolled, we'll share the recordings and the material as soon as possible. Okay. If anyone else has any doubts, please raise your hands. Okay. Tarun sir, you can unmute yourself. Yeah, which demat account? I mean, I have the fires. They have some ready-made, bull call spread, bear call spread. See, if you wish to sell options, sir, then I will advise you can open account with Angel Broking or Allies Blue. Okay, these two are good brokers.
Okay. I think last 10 slots are left, and since many people are interested, I'll be launching a poll. If you're interested and you have not paid up till now, just fill in your details in this poll and I'll call you directly. And you can clear all your doubts that you have with me one-on-one. Okay, I'll clear all your doubts. You just need to fill in if you're interested in knowing more about the bootcamp, and if you have any doubts but you have not paid yet, just fill this form and I'll contact you after the class ends. Okay. So do we need to learn adjustment for straddle? No, we will learn some plain basic straddles. There is no role of any adjustment. Okay, so because many of you are beginners, so adjustment will be very heavy topic. So initially practice some simple straddles which works very well. Slowly and gradually, once you gain experience, then you move on to adjustment part. Okay. Sir, order flow works in markets? Yes, order flow do work. So that will be the separate course where you can learn order flow. So as of now, we do not have any course related to order flow, but it is completely different topic. Okay. Okay, this would this course be beginner friendly? Yes, as I told you, we will give you the option starter kit if you are not aware about option basics. So if you wish to start from zero level, so you can watch that option starter kit, and then we will cover strategies. Yeah, plus we'll also be sharing the ebooks with you guys, so you can study those, and I think those will be good to go, right? And whatever we have learned in technical analysis bootcamp, agar aapne technical analysis bootcamp join kiya tha, so all those things will help you, okay, while creating options. Because what we will do, we will not only simply design strategy, okay, we will first do price action analysis, and based on analysis, we will select, okay, which strategy we can design. So whatever we have learned in technical analysis bootcamp will help you in options bootcamp as well. Okay. Ajay sir की payment fail हुई है, so please try कर लीजिए, because after the class ends we won't be able to give you the discount. So if you're interested, you can enroll via the link shared. I'll also share the link again in the chat itself. I'll share the link. I've shared the link with you and the UPI number also. If you're interested, feel free to ask all your doubts from me. And if anyone else has any doubts regarding the session, you can raise your hands. Manish will clear all your doubts. Okay. Nitin sir, please try to unmute yourself. हेलो रिचा मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मेरा मनीष सर से एक सवाल था। यस सर। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बताइए। सर मैं ऑलरेडी आपका स्टूडेंट हूँ, जो का बेसिक वाला कोर्स है वो मैं कर रहा हूँ। ओके। मैं ये भी ज्वाइन करना चाहता हूँ, बट मेरे अभी क्या है कि लास्ट अभी हमारा सेशन एंड हो रहा है, मैं स्कूल में क्लर्क हूँ, तो मैं अभी इसको ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। बाकी हूँ मैं इंटरेस्टेड, बट 14 तारीख बाद अगर कोई सेशन हो तो। 14th के बाद? 1/4। हाँ सर, 16 मई को हमारा क्या है कि स्कूल क्लोज होता है क्या, तो उसके बाद मुझे टाइम मिलेगा। और अभी लास्ट टाइम पे हमारे पास वर्कलोड भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, आपको मई मंथ में ज्वाइन करना है, राइट? इन द मंथ ऑफ मई? यस सर। ओके, ठीक है। अगर वो टाइम पे हमने कुछ इंट्रोड्यूस किया बूट कैंप, देन वी विल डेफिनेटली गिव यू द अपडेट। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप एनरोलमेंट कर लीजिए, आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे। आप वीडियोस अपने हिसाब से जब आपको टाइम मिले आप देख सकते हैं।
सर मेरे कुछ साथ डाउट्स या क्वेरीज हो यू कैन आस्क विद मी। सर मेरे साथ गलती यही हुई थी कि मैंने अनिरुद्ध सर वाला जो प्रोग्राम ज्वाइन किया था उसमें मैंने आपको भी साथ में लिया था। दिक्कत ये हुई कि सर लाइव क्लास का जो मजा आता है वो रिकॉर्डिंग देखने में उतना नहीं, मतलब अटेंड फोकस नहीं हो पाता है। अभी जैसे आपकी लाइव क्लास चल रही है तो बिल्कुल हिलने का, मतलब अपनी चेयर से हिलने का मन भी नहीं करता, पूरा सुनने का मन। बट रिकॉर्डिंग में क्या इरिटेशन आती है, ये मेरे अंदर एक डिसऑर्डर है, सबके अंदर हो सकता नहीं हो सकता, डजेंट मैटर। बट मुझे लाइव क्लास ही ज्वाइन करनी थी। ओके सर मेरा सवाल ये था आपसे, सर एक मैं लास्ट 4 साल से ट्रेडिंग के सेशन में हूँ, कभी कर रहा हूँ कभी छोड़ रहा हूँ, बट पूरा नॉलेज नहीं होने की वजह से मैंने बहुत सारे लॉसेस भी किए हैं और लॉसेस से ही मैं सीख रहा हूँ। तो सर मेरा एक सवाल है, जो आईवी शब्द जो आता है ऑप्शंस के अंदर, यस उसका मीनिंग मुझे, मतलब मेरे को कंफ्यूज कर रहा है कि आईवी मींस क्या होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू, या फिर इंडिया विक्स होगा, या फिर क्या एक और नाम क्या, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इन तीनों में डिफरेंट क्या, तीनों एक ही है या अलग अलग है? नहीं, ये तीनों अलग अलग है। अच्छा इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी वो बेसिकली आपको बताता है कि ऑप्शंस कितना वॉलेटाइल हो सकता है, उसको आईवी हम लोग कहते हैं। जी। और दूसरा आईवी अगर ऑप्शन इन द मनी है तो वो कितने से इन द मनी है, वो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू पार्ट बताता है। फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए निफ्टी 17,000 पे अभी स्पॉट ट्रेड कर रहा है जी और मैं 16,900 का कॉल ऑप्शन खरीद रहा हूँ, जी तो ऑलरेडी देखिए वो 100 पॉइंट्स ऊपर है निफ्टी। तो ये बराबर। 100 पॉइंट्स को हम कहेंगे आईवी, इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके मतलब मैंने कॉल ऑप्शन आईटीएम बाय किया है 100 आईवी का। ठीक है। और वॉलेटिलिटी, इंट्रिंसिक वैल्यू, इम्प्लाइड वॉलेट, और इंडिया विक्स का सेंस ये अभी कहीं, मतलब इसका इससे देखिए भी इंडिया विक्स का क्या है, आपको बेसिकली इंडिया विक्स आपको फेयर हेल्प करने में मदद करता है कि ऑप्शन ट्रेडर्स कैसे फील कर रहे हैं। अगर इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है सो दिस इंडिकेट्स मार्केट में काफी ज्यादा फेयर है। हाँ जब ऑप्शंस भी की मार्केट प्रीमियम। नीचे आता है जी तो विक्स जो इंडेक्स है ना ये ऊपर जाता है, और बराबर। विक्स इंडेक्स जैसे ही ऊपर आना स्टार्ट हुआ तो ऑप्शन प्रीमियम्स इंक्रीज होने स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन के प्रीमियम्स बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। जी तो सर। मतलब वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है एकदम से मार्केट में। तो सर इन तीनों का सिंबल अलग अलग होते हैं या एक ही आईवी लिखा हुआ होता है, वही होता है? मैं कैसे जज करूंगा कि ये इंट्रिंसिक मोस्टली वैल्यू? जो आईवी ट्रेडर्स यूज करते हैं वो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के लिए यूज करते हैं, नॉट फॉर इंट्रिंसिक वैल्यू। अच्छा ओके सर, थैंक यू फॉर। मनीष सर। यस, हाँ जी। तो इज इट पॉसिबल कि हम किसी ग्राफ पे आज जो हमने स्ट्रैटेजी सीखी है उसको इम्प्लीमेंट करके आप एक बारी दिखा पाओ? वुड दैट बी पॉसिबल? दिस वी हैव कवर्ड ऑलरेडी, इसमें हमने रिसेंट एग्जांपल्स दिखाए इसके, अच्छा बंधन ठीक है। बैंक, विप्रो, ऑल रिसेंट एग्जांपल्स वी हैव शोन। ओके ओके ओके। एक्चुअली एक डाउट आया था दैट ही वांटेड टू सी कि लाइक मतलब आपके साथ ही, तो दैट्स व्हाई। What is the success rate of this sell option and hedging strategy? स्ट्रैडल, यू आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रैडल राइट? सेल ऑप्शन आपको करना है स्ट्रैडल। सो अगेन इसका भी जो विन रेट है 65 to 70% के बीच में। सो वी बेसिकली डिजाइन दिस स्ट्रैडल विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। Okay. Sanjay sir, please try to unmute. हेलो हाँ जी सर। मनीष सर। yes, अच्छा सर, ये जो आप सीपीआर और आईवी बता रहे हैं तो इसका चार्ट कहाँ से मिलेगा? देखिए आईवी तो हम लोग यूज नहीं करेंगे। ओके, सीपीआर आप ट्रेडिंग व्यू पे चेक कर सकते हैं। सीपीआर ट्रेडिंग व्यू पे ये रेडी इंडिकेटर है सीपीआर। सो दैट आई विल शो यू हाउ यू कैन ऐड दिस इंडिकेटर। जैसे हम आरएसआई मूविंग एवरेज अप्लाई करते हैं वैसे ही सीपीआर इंडिकेटर हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू में, या अगर आप जीरोडा यूज करते हो तो वहां पर भी अवेलेबल है। अच्छा सर, अगर जैसे सीपीआर का मतलब अगर ये 1 से कम है तो ये बियरिश है और 1 से ऊपर है तो ये बुलिश है? नहीं, सीपीआर अलग इंडिकेटर है, ओके। प्राइस एक्शन इंडिकेटर है। सो मोर देन 1 लेस देन 1 हम नहीं देखते हैं सीपीआर। सर एक सीपीआर मतलब कॉल पुट रेशियो? नहीं नहीं, वो अलग हो गया, उसको पीसीआर कहते हैं सर।
ये Put CPR call है, ratio. सेंट्रल पिवट रेंज. ओके, दिस इज सेंट्रल पिवट रेंज. जो आप बोल रहे हैं वो पुट कॉल रेशियो है, PCR. ओके ओके, तो वो तो उससे तो पता लगता है ना सर कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा. राइट, वो भी आप यूज कर सकते. देखिए रेशियोज अगेन डेरिवेटिव्स में भी बहुत सारे हैं, तो अगेन डिपेंड ऑन ट्रेडर टू ट्रेडर. तो कुछ ट्रेडर्स यूज करते हैं PCR, कुछ ट्रेडर्स नहीं यूज करते हैं. ओके कुछ ट्रेडर्स ऑप्शन चेन एनालिसिस से प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि कौन से डायरेक्शन में मार्केट लग रहा है, बुलिश साइड, ओके. बेयरिश साइड. तो सर अगेन IV का कुछ उसका इंडिकेटर आता है? देखिए IV जो है वो ऑप्शन ग्रीक में आता है, सो दैट वी विल नॉट कवर इन दिस बूट कैंप. ये सब स्ट्रेटजीज इतनी सिंपल है कि आपको ऑप्शन ग्रीक्स की फिलहाल नीड नहीं है. हम लोग प्राइस एक्शन बेसिस पे ये सब स्ट्रेटजीज डिजाइन करते हैं. लेकिन सर जी नॉलेज तो होना चाहिए ना. नॉलेज होना चाहिए. अभी वो अगेन एडवांस लेवल हो गया, काफी हाई लेवल पे चीजें चली जाएंगी. ओके. Yeah. क्योंकि मैं सुन रखा है कि IV का भी इंडिकेटर होता है, PCR का इंडिकेटर होता है. आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी. ओके iCharts.in करके वेबसाइट है, वहां पर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो सब इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे. थोड़ा आपको ओके. प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा उनका. अच्छा, यस. कोई NSE के वेबसाइट पे या और दूसरा जहां से फ्री अवेलेबल हो? लाइव मार्केट में अगर आपको रियल टाइम में डेटा चाहिए तो प्रीमियम वर्जन में जाना पड़ेगा सर आपको. दूसरा कोई रास्ता नहीं है? नहीं सर, प्रीमियम वर्जन से. ओके सर, थैंक यू. Sir, I have a doubt. Can I just take that up? ओके. हाँ जी. तो इन्होंने लिखा है कि ऑप्शंस में टाइम वैल्यू डीके कैसे इम्पैक्ट करता है, एंड व्हाट ऑल शुड वी कीप इन माइंड. देखिए जैसे जैसे ऑप्शन एक्सपायरी के नियर आता है तो उसका जो प्रीमियम है वो कम होना स्टार्ट करता है. ऑल आउट द मनी ऑप्शन, एट द मनी ऑप्शन, इनका प्रीमियम डिक्रीज होना स्टार्ट करता है. सो प्रीमियम डीके इज अ रैंडम कंसेप्ट. ओके, ऑप्शन प्रीमियम डीके पूरे दिन में कभी भी हो सकता है रैंडमली. बट ऐसा देखा गया कि वेडनेसडे, दैट इज वन डे बिफोर एक्सपायरी एंड ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, प्रीमियम डीके सबसे ज्यादा होता है. सो जब आप एक्सपायरी डे के आसपास ट्रेडिंग करते हो तो डू नॉट ट्रेड OTM ऑप्शंस. आप आउट द मनी ऑप्शंस में ट्रेड मत कीजिए. आप नेक्स्ट एक्सपायरी ट्रेड कर सकते हैं. अगर आपको करंट एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करना है, यू कैन ट्रेड नेक्स्ट एक्सपायरी. तो उसमें कैसे टाइम डीके थोड़ा कम मिलेगा आपको. ओके, तो दैट मीन्स कि हमें थर्सडे को ट्रेड नहीं करना चाहिए इन ऑप्शंस. या करंट एक्सपायरी में आप अगर ऑप्शन बायर हो, आप इफ यू आर ऑप्शन बायर, सो डू नॉट बाय करंट expiry contract because they are likely to expire today. You can buy next week expiry. ओके ओके. इन द बूट कैंप हम ये हेजिंग कैसे करनी है ऑप्शंस में, वुड वी बी लर्निंग दैट? Right. How Okay. to do hedging, that we will learn. Okay, hedging something up at this stage you just understand. We will protect our position. हम लोग अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए hedge पोजीशन डिजाइन करते हैं. So let's say for example आपने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है. Now what if tomorrow price came down, प्राइस नीचे आ गया, what will happen? तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में आपको लॉस होगा. तो इसके लिए हम सिर्फ फ्यूचर्स ऑप्शन बाय नहीं करेंगे, हम लोग साथ में एक पुट ऑप्शन भी बाय करेंगे. सो इन केस इफ टुमारो माय व्यू इज गोइंग अराउंड, प्राइस इज कमिंग डाउन, तो नो डाउट आपको फ्यूचर्स में नुकसान होगा, बट पुट ऑप्शन में आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा. सो यू कैन सेट ऑफ सम लॉसेस. देखिए ये ऑप्शन स्ट्रैटेजीज का मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट डाउन साइड. ओके, नॉट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, बिकॉज वी आर टेकिंग ओवरनाइट पोजिशन. तो ओवरनाइट पोजिशन में ओवरनाइट रिस्क इन्वॉल्व होता है. टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवरनाइट रिस्क वी विल क्रिएट हेज पोजिशन. इन केस लॉस होगा भी तो आपको कम लॉस होगा. दैट्स द बेनिफिट. Okay. Okay, I think we're done with the sir. Okay, Jay Kumar sir is asking, please ask sir, in bootcamp will we learn to buy naked call or put if we had low amount to trade? राइट. सो आज जो हमने स्ट्रैटेजी सीखी, यू कैन यूज दी सेम स्ट्रैटेजीज टू बाय नेकेड कॉल, नेकेड पुट इफ यू हैव स्मॉल कैपिटल. सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड 3 स्ट्रैटेजी. आज हमने 3 स्ट्रैटेजी डिस्कस की. Okay, you will get this recorded video. You can watch this again and you can implement these 3 strategies. Okay, in live market.
Okay, sir. I think we're done with the doubts. If anyone, I think Sanjay sir has raised his hand. Sanjay sir, can you unmute yourself? हेलो Hello, sir. एक्चुअली मैं बहुत लेट ज्वाइन किया, जस्ट 5 मिनट्स पहले ज्वाइन किया है। आप मेरे को इसका रिकॉर्डिंग दे सकती हैं ताकि मैं पूरा देखूं और समझूं इस कोर्स के बारे में? हाँ जी सर, हाँ जी, we'll provide you with the recordings in the WhatsApp group itself. ठीक है, हाँ जी. थैंक यू। Okay, I think we're done with the doubts. If someone is interested to enroll but has not enrolled due to some issues, please drop in your number and I'll call you. We'll try to solve all your issues. And the bootcamp starts from 23rd of April. So if you're interested, let me know. I'll share the link again for enrolling. You can directly pay to the pay via number using UPI. And I think, are we done with the session today for today, Manish sir? Yes. Okay. I think then we can end the session now. Okay. Thank you. No problem, sir. No problem. Manish sir, are you there? Yes. We have one doubt. If time decay options is inevitable, then put option will be 100 PC profitable around expiry date. See, all options will not go to zero. Only options which are OTM, okay, they will turn zero on expiry date. So every option will not become zero. So that's why, we will do option chain analysis. First, we will try to find out, okay, what is the range for Nifty to settle on expiry day. Then accordingly, we will select strike price, okay, which strike price we should sell. Okay. Okay. If anyone else has any doubts regarding the bootcamp, you can unmute yourself now. I'm here and I'll answer all your doubts.